You are super. Excellent. Students, this is your maths class and I'm your maths teacher and you will take maths class, okay? Students, कल हमने कौन सा digit पढ़ा था? आपको याद है? Do you remember? Which digit we learned yesterday? Which digit we learned yesterday? Do you remember? 7. We learned digit 7. Okay? Show me your 7 fingers. Show me 7 fingers. Shabash, show me 7 fingers. Good. Excellent. कल हमने जो था digit 7 किया था. कौन सा digit? Digit 7. ये कौन सा digit है? Digit 7. Which digit is this? 7. Repeat with me. 7. 7. Hurry up. 7. Good. कौन सा digit है ये? 7. Okay. And today we will learn new digit. Dear students, what's come after 7? Do you know what comes after 7? Digit 8. Digit 8. After comes digit 8. 8. Now show me your 8 fingers. 8 fingers. 8. और आज हम digit 9 करेंगे. ठीक है? कौन सा digit? Digit 9. Today we will learn digit 9. Digit 9. कौन सा digit है? Digit 9. ठीक है? Repeat with me. 9. कौन सा digit है? Digit 9. Okay. Today we will learn digit 9. कल जो है हमने 8 किया था और उससे पहले मंडे को हमने 7 किया था. ठीक है? 7, 8, 9. Okay. 7, 8, 9. What digit is this? 7. After 7 comes 8. Digit 8. And after 8 comes digit 9. So today we will learn digit 9. Okay? Today we will learn digit 9. Repeat with me. 9. 9. 9. Okay? This is digit 9. Show me your 9 fingers. 9. 5. 5 के साथ 4 और प्लस करें. 9. ठीक है? Show me your 9 fingers. Good. Excellent. Shabash. 9 fingers. ठीक है? Students, now I show you some pics. What are these? What are these? Students, what are these? These are strawberries. What? Strawberries. Okay? ये क्या है? Strawberries है. And how many strawberries I have? I have
9 strawberries. Excellent. ठीक है, कल हमने डिजिट 8 किया था और आज हम डिजिट 9 करेंगे, सही है? And how many strawberries I have? Today I have 9 strawberries. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many strawberries? 9 strawberries. Again, repeat with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Students, do you like strawberries? कौन से सीजन में स्ट्रॉबेरीज होते हैं? समर में या विंटर में? समर में होते हैं, ठीक है? ये समर स्टार्ट है ना, और ये जो है स्ट्रॉबेरी का सीजन भी स्टार्ट है, ठीक है? आपके लिए पापा लाते हैं स्ट्रॉबेरीज। I like strawberries. Do you like? ठीक है, स्ट्रॉबेरीज का जो है हम मिल्क शेक भी बनाते हैं। आप बनाते हैं मिल्क शेक? इसका मिल्क शेक बहुत टेस्टी होता है, ठीक है? और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, ठीक है? And students, what's the color of strawberries? कौन से कलर का ये स्ट्रॉबेरीज है? रेड कलर का। कौन से कलर का? रेड कलर का। और इसके जो लीव्स होते हैं ना, वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है? इसके जो लीव्स होते हैं ना, ये ग्रीन कलर के होते हैं और इसके ऊपर ब्लैक डॉट्स भी होते हैं। कौन से कलर का डॉट्स होते हैं? ब्लैक डॉट होते हैं, ठीक है? ये जो है रेड कलर का होता है और उसके जो लीव्स है वो ग्रीन कलर के होते हैं और इस पे ब्लैक ब्लैक डॉट्स भी होते हैं, ठीक है? Once again, count once again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितनी स्ट्रॉबेरीज है? 9 स्ट्रॉबेरीज है, ठीक है? और स्ट्रॉबेरीज का कलर कौन सा है? रेड कलर का है। और किसने रेड कलर का शर्ट पहना है? शोमी। शोमी, किसने रेड कलर का शर्ट पहना है? शाबाश शोमी। किसने रेड कलर का शर्ट पहना है? हरी अप। किसी ने भी नहीं? किस? गुड, मोहम्मद ने पहना है, ठीक है? मोहम्मद ने रेड कलर का शर्ट पहना है। और किसने? और किसी ने नहीं? ठीक है। अहमद, ये रेड कलर का क्या है? मैंने शर्ट के बारे में कहा है, ठीक है? रेड शर्ट, ठीक है? वन टाइम, एक बार और रिपीट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are 9 strawberries. And students, कल हमारे पास कितने कलर पेंसिल्स थे? डू यू रिमेम्बर? कितने कलर पेंसिल्स थे कल मेरे पास? कल जो थे मेरे पास 8 कलर पेंसिल्स थे। कितने? 8 कलर पेंसिल। और कल हमने कौन सा डिजिट पढ़ा था? डिजिट 8, ठीक है? डिजिट 8। काउंट करिए कितने पेंसिल्स हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8। कल हमारे पास 8 था ना, और आज मैंने इसके साथ एक और रखा, तो कितने हो गए? 9। आज हमने कौन सा डिजिट पढ़ा? डिजिट 9। अगेन काउंट 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। Today we will learn digit 9. Okay, today we will learn digit 9. Students, now आज के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हमने किस तरह 9 को राइट करना है। ओके, हाउ वी विल राइट डिजिट 9। So look at here. First standing, I will put some dots here. Okay, here standing line and semicircle. I put dot here. First I'll draw standing line, then semicircle. Semicircle, ये आपने semicircle जो बनाना है ये सी की तरह, ठीक है? जिस तरह आपने स्मॉल सी राइट करना है ना, इसी तरह ये आपने राइट करना है। स्टैंडिंग लाइन एंड semicircle. Standing line and semicircle. राइट करें, शो मी। किसने राइट किया 9? डिजिट 9 किसने राइट किया? किसने डिजिट 9 राइट किया? शो मी। इस तरह again I'm putting dots here. Standing line and semicircle. इस तरह स्मॉल सा सी आपने बनाना है, ठीक है? स्मॉल सी, इसको ट्रेस करना है और डिजिट 9 को कंप्लीट करना है, ठीक है? इस तरह स्टैंडिंग लाइन और semicircle. Standing line and semicircle. Here standing line, डॉट्स पे करना है। फर्स्ट हमने क्या करना है? डॉट्स पे राइट करना है, उसके बाद हमने फिर उसको ट्रेस करना है। सही है? स्टैंडिंग लाइन एंड सेमीसर्कल। इस तरह आपने स्टैंडिंग लाइन को ट्रेस करना है और फिर सेमीसर्कल को आपने ट्रेस करना है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये क्या बन गया? डिजिट 9। ये क्या हो गया? digit 9. It's like what? Digit 9. ठीक है? Again standing line and semicircle. Standing line and semicircle. इसी तरह आपने डॉट्स जो है ड्रॉ करनी है और फिर इसको ट्रेस करना है। इसी तरह आपने डॉट्स लगाए हैं, ठीक है? इसका भी आपने ट्रेस करना है। स्टैंडिंग लाइन, semicircle. Standing line, semicircle. It's like what? Digit 9. Digit 9. Which digit is this? Digit 9. Again. इसको आपने ट्रेस करना है इस तरह। स्टैंडिंग लाइन को मैंने ट्रेस किया है ना, और इसके बाद में सेमी सर्कल को ट्रेस करूंगी। इसी तरह सेमी सर्कल आपने
स्मॉल सी की तरह, जिस तरह स्मॉल सी होती है ना, इसी तरह आपने सेमी सर्कल को ऐसे बनाना है। ठीक है, लाइन को फर्स्ट आपने स्टैंडिंग लाइन और इसके बाद स्मॉल सी। ठीक है, here standing line, semicircle, standing line, semicircle, standing line, semicircle. ओके, आपने सीखा किस तरह आपने डिजिट 9 को राइट करना है। ठीक है, किस किसने सीखा? रेज योर फिंगर। हरिया, किस किसने डिजिट 9 को सीखा कि किस तरह आपने इसको राइट करना है? गुड, एक्सीलेंट। और किसने? गुड। अब आपको आता है ना आपने किस तरह डिजिट 9 को राइट करना है। फर्स्ट आपने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है और उसके बाद सेमी सर्कल। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन और सेमी सर्कल। Take out your rough notebook and write down your diary. Okay, this is your diary time. Take out. Maths, right here, maths, maths, M A T H S. It's like what? Maths. Or below maths, you write here small w plus O. W is stand for written and O is stand for oral. Okay? Right here do, D or do, practice, PRACTICE. Do practice of digit DIGIT, digit 9। digit 9 का आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रफ नोटबुक में आपने इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इन रफ नोटबुक। NB stand for notebook. Okay, and last full stop। ठीक है, आपने यहाँ पे full stop करना है। ठीक है, again I am revising your diary. Maths, do practice of digit 9 in rough notebook. राइट कर लिया? राइट कर लिया डायरी को? किस किस ने राइट कर लिया? रेज योर हैंड्स। ओके, कल तक नेक्स्ट वीक में फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।